Hello, namaskar dosto. Welcome to a video which with the headline Stocks with SD. जैसे बोला जाता है, I'm going to discuss some stocks as an individual where I may have some interest. Usually I do not discuss these stocks or individual stocks. आप अगर देखे होंगे मैं आप लोगों के साथ stocks discuss कर रहा हूँ तो मैं एक sector को ले लेता हूँ, एक banks को ले लेता हूँ, banking as a sector या कोई sectors को ले लिया, sector discussion किया because as an individual stock I should not make anyone biased because there are so many thousands upon thousands. ऐसा commodity में नहीं है. Commodity few counters, so you may always go find a better counter, better stock which may give you way better return. और ये जो ट्रेडिंग जो है ये किसी के सुन के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मैं कभी भी रिकमेंड नहीं किया किसी को मेरा सुन के ट्रेड करो. तो मैं आज भी वैसा ही आपको खुद जानना चाहिए. आज भी मैं वही बोलूंगा कि किसी को सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए. दैट इज अ वेरी बैड थिंग. आप अगर खुद का सुनेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, तो आई थिंक यस योर वेल्थ ग्रोथ का जो जर्नी है, यू मे नॉट बिकम अ सुपर डुपर ट्रेडर, बट ये आपका जो वेल्थ ग्रोथ जर्नी है, एक ऑल्टरनेट इनकम बिल्डिंग जर्नी, ये आप जरूर तय कर सकते हैं. एंड कुछ पोर्शन तो ये आपका ड्यूटी भी बनता है टू ग्रो योर वेल्थ, तो ये आप जरूर कर सकते हैं. तो इसीलिए ये वार्निंग मैं देना पसंद करूंगा. बिल्कुल किसी का सुन के, मेरा भी सुन के ऐसा ट्रेडिंग मत कीजिएगा. तो नाउ लेट्स कम टू द चार्ट्स. तो यहाँ पे पहले मैं कुछ यूएस स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, देन कुछ इंडियन स्टॉक्स. उसमें से लार्जली एक रिक्वेस्ट पे आया है, लार्जली इसीलिए दीज आर. पहले फोकस करेंगे यूएस स्टॉक्स, देन आई विल लुक एट सम ऑफ द इंडियन स्टॉक्स व्हिच माइट बी लुकिंग वेरी गुड. सो दिस इज द बार्कशायर. ऑब्वियसली इसी से स्टार्ट करते हैं. वॉरेन बफे का नाम आप सब लोग जानते हैं. बार्कशायर हैथवे का वो कंपनी है. तो मैं पहले जो ट्रेडिंग में करता हूँ इन द इक्विटी सिलेक्शन, आई गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू द वीकली चार्ट, लाइक फ्रॉम वेयर इट इज बाउंसिंग बैक, this weekly buy signal, these are I very much value. And when I'm into a stock, when I'm entering a stock, I focus on the daily chart to fine tuning the entry and also do the re-entry points. So daily chart के हिसाब से Berkshire Hathaway में usually I also देखिएगा, कभी भी रेयरली मैं डेली चार्ट में आता हूँ. इंडिविजुअल एंट्री पॉइंट ये सब रैदर एक ब्रॉड डिस्कशन रखता हूँ ताकि आपको सिलेक्शन में हेल्प हो, क्योंकि किसी का सुन के बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना चाहिए. But this is a beautiful breakout in Berkshire Hathaway. I'm planning to increase more into this one. Earnings coming up. I think earnings of Berkshire is going to be quite good this time. Overall उनका business portfolio के हिसाब से, and I'm expecting bigger rise into Berkshire Hathaway. बट ओवरऑल अगर देखा जाए यूएस स्टॉक्स में एक वीकनेस भी आ रहा है. अर्निंग सीजन आ रहा है सामने. अर्निंग सीजन से पहले ऑलरेडी थोड़ा S&P 500 में, ये है S&P 500 का डेली चार्ट. यू कैन सी मोमेंटम क्रॉसओवर इन माय RSI X and short term momentum to be bearish. Similarly, Nasdaq, even the short term trend has become neutral. It is no longer bullish. सो ये आपको काउंट करना चाहिए. ये सब कुछ देख के सुन के मैं इन्वेस्ट ट्रेडिंग करता हूँ. सो कभी भी मेरा सुन के जंप करना किसी बहुत सारे रीजन के वजह से ठीक नहीं होगा. बट डेफिनेटली जो स्टॉक का मैं बात कर रहा हूँ, आप उसका चार्ट जरूर देख सकते हैं. मैं वे कम इनटू योर सॉरी, मैं बेकर ह्यूज में था क्या? आई थिंक मैं बेकर ह्यूज में चला गया था. स्टॉक का इनका टिकर में, दिस इज द बर्कशायर का टिकर. सॉरी, मैं कंफ्यूज्ड हो गया था. सो आई डिड नॉट फोकस फुल्ली ऑन द चार्ट. उस पर अदरवाइज पता चल जाता. दिस इज अ ब्यूटीफुल सिमिलर कमबैक, वही डेली एंड देन द ब्रेकआउट. दिस इज द बर्कशायर का चार्ट. आई एम क्वाइट बुलिश ऑन बर्कशायर. दिस इज द वीकली ब्रेक. दिस इज द बर्कशायर बी क्लास शेयर, जिसमें वोटिंग राइट्स वैसे नहीं है. So this is a breakout in Berkshire share and looks like it's going to go up and go finally further up. So I'm remain bullish on this one. And दूसरा जो देखे थे Baker Hughes company, उसमें भी मैं bullish हूँ. This is Baker Hughes company. I'm bullish into this one. Look at the beautiful weekly chart, strong coming back, and looks like it is very likely will be testing this 37, which will be another round of
quite a good run of 3, 4, 5%, 5% around. So this is the kind of run I'm looking for, and if it's a good break, can break higher, this Baker Hughes, then it will be an awesome move. The another stock which is quite good, जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, इसका मैं बहुत बार स्टूडेंट के पास हाईलाइट किया हूँ, टेस्ला. It has done after a good move, it has done well. आने वाले दिन में कंसोलिडेशन हो सकता है, बिफोर अराउंड 300 एरिया कंसोलिडेशन मिल सकता है इन द टेस्ला. मेन सपोर्ट इसका बन जाएगा अराउंड 226. सो टेस्ला में बिल्ड करने का ही सोचूंगा. 200 to 226 का जो जोन है, एंड मंथली में आई स्टिल डोंट हैव अ फुल ग्रीन कैंडल. सो डिफरेंट सिग्नल जैसे मुझे मिलता जाएगा, मैं उसको ऐड करूंगा फर्दर. बट ये जो लेवल है, आई डोंट थिंक टेस्ला वुड बी कमिंग बैक बिलो दिस 215. टेस्ला significantly looks bullish. We do have a momentum crossover. And if Trump wins, this time with Elon Musk supporting full throttling, full forcefully with Donald Trump, and if Trump wins the election, the Elon stocks can significantly go up. So, but Tesla is then the long game. It's not for very short term. We are going to hold Tesla. Let's see how it goes. And weekly, daily के combination में like a correction मिला था Tesla में. And after that, a full green candle as a re-entry opportunity in Tesla. So a combination of weekly and daily karke, I'm monitoring Tesla here. The another stock which I'm not in profit is Intel Corporation, but it is just starting up. I could be in profit. It is a very early signal. As I said, I give importance to the weekly signal in case of US stocks, as I'm more specific in choosing US stocks, and all the stocks are within S&P 500 or NASDAQ 100. So this is basically looks like a comeback. I'm aware of there are a lot of resistances also, but Intel is such a well-known company. It is a awesome company. उस हिसाब से यहाँ पे एक buy बनता था. I can't say that I'm in profit. I'm in marginal loss actually into this one, because once it was confirmed, then only in the weekly it had to confirm. So once the only it is confirmed, so I only could enter. So this is first buy signal. I think Intel has potential, and it was a very important support. Mountain top, जो resistance और mountain top, उसका opposite trench bottom, और वहीं से strong base बनाया $30 के आसपास. So compared to the base, ज़्यादा move हुआ ही नहीं, just 13% move हुआ है. So Intel can go big. There are resistances. So let's see how Intel Corporation goes. Then we have, ये भी मैं students को highlight किया था, that is BlackRock. BlackRock एक investment company है, उनका share है दुनिया का one of the biggest investment company है, उनका share available है. BlackRock is another important एक resistance level वो clear करने की कोशिश में है. ये breakout हो रहा है, breakout के साथ साथ ये जो mountain top resistance है around 840 area, उसी पे 836 area, उसके ऊपर ये sustain कर रहा है. So once it sustains, then it opens up this breakout. If successful, it opens up a move towards $959. That will be quite a good move. So this, looking at this one compared to the risk that I have around 800 area, or about 5%, around 5.2%, it's quite a good risk reward if I consider this weekly entry. So this is a weekly breakout, beautiful breakout after the buy signal. So I'm remain bullish on a BlackRock, but once again, किसी का सुन के, मेरा सुन के trade मत कीजिएगा. Then we have then Equifax. Sorry. Then we have Equifax. This is another stock which I'm bullish. Look at the comeback. Last time this could not break higher. Once again coming back.
If the break successful, this I'm already in profit. I entered as buy support, already in good profit. Another round of alert is pending, buy breakout. Very likely it is going to test 288 and has the potential to break even higher. Another good stock is, I thought, would be Expedia. Expedia, I thought, would be a good, because iska reason is it's coming back from a very strong level. It has resistance, but compared to jahan se main start kiya hu, it is quite good. Equifax has in fact moved into good profit and looks like another round of 150 ka fight is coming due. But if 155 broken, this 177 or 155, ye zone will be the main important. So Expedia is another one. Then we have, I love exchanged stocks. Then we have Intercontinental Exchange. Crude oil एक popular product है Intercontinental Exchange का. Dollar index एक popular product है. This is ICE index and it is significantly broken higher. So ICE I'm bullish as well. Then on the IT sector, also on the financial sector, this is PNC Financial Services Group. Awesome run, already बहुत बढ़िया रन चालू हुआ है, बट मुझे लगता है कि और भी पेंडिंग. ये मेन रेजिस्टेंस है 185, इसका टच तो मैं डेफिनेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इसको मैं यहां पे क्रॉसिंग अप से 183 जब क्रॉस करेगा मुझे अलर्ट दे देगा. ठीक है. So it has already moved very good and looks like this, ये जो मेन जोन है इसका इमीडिएटली ब्रेक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट ये जोन चालू हो रहा है 186 तक, 200 तक ये लास्ट करेगा. तो ये जोन को तो ये बराबर टेस्ट करने जा रहा है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फर्दर बिगर राइज इन द PNC फाइनेंशियल सर्विसेज. नेक्स्ट वी हैव F5 Inc. from Nasdaq. Strong comeback from a very important level, and I think it has potential to break higher this 192. If it breaks higher, it can gradual main resistance are at 211. So it's a good comeback in FFIV. गोल्ड सिल्वर तो ETF के जरिए हम लोग कर ही सकते हैं. अनदर वन इज की कॉर्प भी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ है, यू नो आई हैव हाइलाइटेड दिस टू यू. की कॉर्प इज अनदर गुड वन. सॉरी, क्या की कॉर्प, जस्ट अ मोमेंट, मैं गलत स्टिकर पे हूं. सॉरी, मैं गलत स्टिकर पे था. दैट्स व्हाई इट क्रिएटेड अ कंफ्यूजन कि ये क्या नीचे जा रहा है स्टॉक. नहीं, दिस इज अ गुड कमबैक. मैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूं की कॉर्प में. So Key Corp, it remains in my focus. If the break is successful, the target becomes around 19 to around $21. So $20 के आसपास रन हो सकता है, which is more than 20% run. So here is I'm looking at Key Corp as well. और Key Corp के साथ I'm into say Eton Corporation. ETN is the ticker. ये थोड़ा अभी तक स्ट्रेंथ दिखा नहीं. आई एम क्लोजली वाचिंग. गॉट अ बाय सिग्नल. ये इससे पहले ये ऑलरेडी रन दे चुका है. मे नॉट बी सक्सेसफुल. आज डन अ वेरी स्टार्टर क्वांटिटी, फोमो क्वांटिटी टू स्टार्ट विद, बिकॉज दिस इज अ वेरी अर्ली स्टार्ट. एंड जैसे जैसे मुझे और कंफर्मेशन मिलेगा इसका स्ट्रेंथ का, like the breakout and the week will be coming towards closing, then I'll be more confident. Actually, a daily chart में it has a strong support around 323, or in what's trailing is the 317. तो it not a very बहुत ही खराब रिस्क नहीं है. मतलब रिस्क रिवॉर्ड is very very favorable.
if the comeback is successful, it is going to be a very big one. But यहाँ पे momentum का divergence है, that's why we need a strong comeback. अगर रिटर्न में किसी भी तरह वीकनेस दिखा रहा है तो I'll exit. ये जो मेरा pilot quantity है, starter quantity, I'll exit because we'll need a strong momentum. Eton will need a strong momentum. सिमिलरली इंडिया में भी कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे ओके इंटरनेशनल और एक स्टॉक IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, another beautiful rise coming from a beautiful base area, a strong buy signal. I prefer this kind of beautiful risk reward, and IBM once 195 200 clears, we can see much bigger rise into IBM. आज डाउन है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, हाउ थिंग्स आर गोइंग आज केयरफुली मॉनिटर करेंगे बिकॉज नैस्डैक इज डाउन. And right time पे entry can give us a very good run on the popular stocks like Google. Look at Google, जो alphabet हो चुका है. It gave us such a beautiful run. But अब थोड़ा correction phase में जी गया है. With the buy signals in the weekly chart, these are powerful signals. So मैं weekly chart का buy signals को काफी इस्तेमाल करता हूं. That is within the rainbow. और उसके बाद डेली चार्ट में रेफरेंस करता हूं, जैसा इट्स क्वाइट क्लियर कि गूगल अभी अच्छा नहीं. आई डोंट नो, आई कांट एंटर राइट. आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक जो करेक्शन वीकली में भी दिख रहा है. सो ऐसा स्टेज जो इसमें अच्छा नहीं जा रहा है इंटरनली, दिस कैन लास्ट फॉर 3 to 28 days तक विदाउट द स्टॉक बीइंग खराब हो जाने से पहले, बिफोर द स्टॉक्स वीकली में भी खराब हो जाए, उससे पहले दिस फेज कैन लास्ट बिटवीन 3 to 28 days. So these are some of the international stocks I'm either invested in big time or I'm interested into going big time. And similarly, there are stocks like in India, Nykaa. This is a very specific, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी का सुन के ट्रेडिंग मत कीजिएगा, डोंट डू दिस. दिस इज जस्ट टू शो द फॉर लर्निंग ऑफ द, मेरा जो रेनबो सेटअप यूजर्स हैं उनके लर्निंग के लिए, लार्जली बिकॉज दे आर न्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल स्टॉक्स, इंटरनेशनल इक्विटीज. सो देयर आर वेज धीरे धीरे स्टार्ट करने का. सो टू गाइड देम, दिस टाइम ओनली आई एम मेकिंग एन एक्सेप्शन. Largely, I give out the individual list of stocks based on the first scanning on weekly chart. So this is the first time I'm sharing this, what exactly I'm doing or what are the exact stocks I'm thinking about. Like Nykaa, you know, Yes Bank and Idea has good risk reward. I've already discussed that. Nykaa has a good risk reward. Nykaa has potential. It has resistance as well. But this is coming under our IPO strategy. In the IPO strategy, we give a stock, unless it's bullish from the very beginning, we give a stock at least 5 to 6 months and look at that after. First entry is either a full green candle or a buy candle. This buy candle entry ke baad, if we continue to see, whenever we see full green candle in the monthly chart, we can enter. And also we keep checking on the weekly chart. Weekly chart, it has broken this long-term trend line, and this can go significantly higher. There are strong resistance 180, there is resistance 186, and then we have main resistance 217. And finally, I expect 217, I expect resistance and some correction as well. But after that, the stock has potential to test out 296. So I like lovely risk reward जहां पे है. I look for, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स तो हम लोग ले नहीं सकते. So always मेरा एक फोकस रहता है कि low risk, which is manageable in case of, say, compared to the return potential. Exact return कभी पता नहीं चल सकता because of futures unknown है. But potential return, यही रेनबो का ब्यूटी है कि वो स्ट्रक्चर के हिसाब से दिखा सकता है
what are the potential return points. So Nykaa is another, will be, I'll not be discussing many others, but another one will be say Rupa. आप similar structure आपको visible होगा. Once Rupa clears this 290, 300 level, that is very good. As long as it is sustaining above these levels, 272, 267, and should not move below 260. So these are the levels it can go for some quite big move, and soon after the big move, the levels that come into play will be 390 and mainly 423 to 465 ka zone. So that's a very good return if Rupa can do it. So given this point पे जहां पे मैं Rupa करना चालू किया हूं, given the buy signal and others, I can take this risk. So these are the risk reward potential I'm closely looking at, and many other which are good based on rainbow buy, and even my TMPV strategies I am rejecting final call based on these important risk reward considerations. Like its stock may not be firing right now. It is consolidation, and in this consolidation, actually usually big money build up position. So ये मुझे क्लियर एक पिक्चर दे रहा है about what. इससे पहले आप देखे होंगे जो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, you are talked about the gland. आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मेरे इसमें नजर. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट ट्रेड. वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड जो होता है, एक बार ये स्टॉक क्लियर कर लिया ये लेवल, then we see awesome ride. But once it is crosses this level, then ye flat zones, these are remains unknown. So unknown part say known levels of risk helps to determine probability के हिसाब से risk reward. So that's why I prefer these entries rather than, or easily these stocks will take time to fire up because they are in early phase. Gland has started firing up. इसका main resistance आ रहा है, देखिए around 2366. 2366 एरिया पे ये डेफिनेटली ट्राई कर सकता है, और ये जो टॉप है 2021, इस एरिया पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है. So Gland has been another one which has given quite a very good return. Another such stock will be Sequent. Sequent Scientific in India. Another lovely breakout. Main resistance is 142. Once 150 crosses, this stock has very big potential. As per rainbow structure, it has, just a moment, I have a call. Let me check it. No, it's fine. Yeah, sorry for this. I had to see these. So yeah, upload. So clearly you can see a pattern here, the kind of stocks I'm looking for, a comeback from a strong base like of these flat line. It has good risk reward potential. No, not many big resistances to halt it so that it can move freely. Another will be Lux Industries. जो लोग इसमें हैं, students, you know that it has already given बहुत ही बढ़िया return, but it took time. ऐसा नहीं, it took some time. इसने base बनाया and it has now started off. और इसको रोकने के लिए ना तो कोई major resistances है, flat zone, unless we reach around 3000. So Lux Industries remains very good, and a beautiful buying is going on. So ये जो जब मैं US stocks में जा रहा हूं, then I'm broadly looking at the S&P 500 stocks या तो NASDAQ stock. यहाँ पे जैसे Zion is another stock like this, broken higher with a potential to reach around this area. I don't think will be able to easily break this, but it is this area के पहले
there is not much. There is a double top around 53. 50 is anyway psychological level. So Zion was a good one. Fast. Let's look at another US stock fast. Still, I'm closely watching, not a comeback. अभी तक comeback हुआ नहीं है. मैं daily chart में जाऊंगा, आप देख पाएंगे it's coming back, not yet done. Resistances are there. But it can break higher. Looking at the structure, not major resistance. Even the mountain top is not a strong flat line. And weekly chart, it can be a strong base, 66 area. So all I need now is the rainbow buy. Once I get a rainbow buy, I'll have the stop loss. Once I have the stop loss, I will determine what is the risk. How much risk can I take? Can I buy $1,000 worth of fast? Can I go for $2,000? Or will I go for $250? Whatever will be, what will be my first trade given the risk reward, and I will consider I'll make the loss. I never ever consider I make profit. I'll consider loss. Then only I'll be aware कि कितना profit में मतलब कितना मैं सह सकता हूँ psychologically. So this is a very important exercise for me. So ये रहा, तो ये कुछ stocks जैसे fast I'm not in yet, but I'm closely watching. But some of the stocks that we discussed here, I'm in. Very likely I'm in. Where some of them are big time. So please do not, as a disclaimer, I'm warning you, please do not listen to others, even including me. Do your own analysis. If you want to learn from me, learn, but I do not suggest direct trades to the students. I give the outlook. And if you are smart enough, you have worked hard enough, those इशारे ही काफी होंगे समझदारों के लिए. Thank you so much for watching my video. All the best from my side. And as always, happy trading.